All right, guys. So the recording has started. I request every one of you to put your name in the chat box as your attendance. Raman has already done it. That's great. Yeah, namaskar. Good evening. Yeah, please write your full name, Pranshu Singh, and uh, Arjun. Put your name as well. Yeah. All right. So I'm sharing my screen. Please tell me that my screen is visible to you. I think there is some error while sharing my screen. So, guys, just allow me a few seconds. I'll be right back. Okay, so I have joined again, and hopefully, I will be able to share the screen. Okay, is it visible now? My screen is visible to you? Because I'm not sure whether it is visible or not. Is it visible, guys? Yes. Okay, my screen is visible, right? So I hope you can see the um name written in green color, that is Signal and Systems, right? So I think we are good to go because I cannot make sure that my screen is visible. Okay, so in case if my screen gets disconnected, you can simply turn on your mic and let me know. Okay, मुझे बता देना कि जब मेरा screen sharing बंद हो जाए. Okay, so what we have seen in the last class, I think in the last class we have seen how to calculate energy and power of the signals and several more things, right? So in today's class, what we are going to do is we are going to see some basic signals. We are going to see insights of those signals, like what are their properties and how we are going to use them, not only in this subject but also in other subjects also. So reason behind this subject is in our syllabus because this particular subject, signal and system, it deals with signals mostly. Okay, तो मतलब इसमें सिग्नल्स का हमें बेसिक से लेके एक हायर लेवल तक अच्छे से सिलेबस दिया है, सो आवर अंडरस्टैंडिंग becomes better with this subject. Okay, so we will start with, okay, wait, so let me just ask कि लास्ट क्लास में मैंने कुछ पावर कैलकुलेट करने के लिए और एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एग्जांपल दिया था, तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया है. आई गेस रमन ने मुझे आंसर भी सेंड किया था. सो वी विल नॉट, लाइक आई वोंट रिपीट दैट अगेन. ओके, सो कैन यू जस्ट राइट फ्यू नेम्स ऑफ सम बेसिक टेस्ट सिग्नल्स. मतलब हमने सिग्नल्स तो पढ़े ही है ना सिग्नल एंड सिस्टम में. अगर आप थर्ड ईयर में भी हो तो आपको सिग्नल एंड सिस्टम नाम का एक सब्जेक्ट रहेगा आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, एंड यू माइट हैव सीन सम काइंड ऑफ सिग्नल्स. सो कैन यू नेम दोज. नेम लिखिए. इम्पल्स सिग्नल, यूनिट सिग्नल, ओके, यूनिट, राइट, रैम्प सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, deterministic signal, unit step signal, right? Okay, okay. Anything else? Time, uh, okay, time variant signal. Yeah. Few more. Sinusoidal signal, cosine, right? Signum function, continuous discrete. All right. Okay, fine. So now our first signal is, please let me know, guys, that my screen is uh, visible to you all the time. Okay. So our first signal is impulse signal. Now you know what is impulse signal, right? So impulse signal को हम denote करते हैं delta of t से, which is 0 for t is not equals to, मतलब t की अगर 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू हो तो t हमारा सिग्नल का आउटपुट क्या रहता है, 0 रहता है. नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, मतलब जो हमारा इम्पल्स यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, सो इट इज इन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, और इट इज कंटिन्यूअस सिग्नल, इट इज नॉट डिस्क्रीट. ओके, सो इन दिस केस, गुड इवनिंग शार्दुल, आई होप screen is visible to you, right? If yes, put in the chat box that my screen is visible to you.
because I was having some issues. Yeah, okay, great. So can you tell me the value of delta of t for t is equals to 0? मतलब t is equals to 0 पे delta की वैल्यू क्या रहती है? Do you have any idea? Do you have any idea what is the value of delta of t at t is equals to 0? हमेशा ड्रॉ करते हैं ना, सी इम्पल्स सिग्नल जो है हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इफ यू रिमेम्बर. सो दिस इज माय इम्पल्स सिग्नल. यहाँ पे कुछ तो ऐसा सिग्नल रहता है वो, एंड दिस इज डेल्टा ऑफ टी. इट लाइज ऑन दिस एक्सिस इटसेल्फ. मैं कलर चेंज करके इसे ड्रॉ करता हूँ सो दैट, या, सो दिस, sorry for this bad drawing. Yeah, its value is ideally infinity. मतलब कि हम डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1 कंसिडर करते हैं एट टी इज इक्वल्स टू 0. मतलब इस पॉइंट पे जो डेल्टा की वैल्यू है वो एक्चुअली इन्फिनिटी है, बट वी कंसिडर इट एज 1. सो इट विल बी t is delta of t is equals to 1 for t is equals to 0. Okay, for our calculation purpose we don't take the value as infinite. So what is this 1? 1 क्या है? 1 is nothing but इंटीग्रेशन ऑफ दिस डेल्टा सिग्नल. मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में अगर हम डेल्टा सिग्नल को इंटीग्रेट करें, सो इन दैट केस वी गेट इट्स वैल्यू एज 1. सो बेसिकली t इज इक्वल्स टू 0 पे हम डेल्टा ऑफ t की वैल्यू ना लेते हुए इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा ऑफ t लेते हैं, एरिया अंडर द कर्व, ये वाला, राइट. सो दैट वाज वन थिंग. नाउ देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा सिग्नल. सो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, लेट अस सपोज वी हैव एन इंटीग्रेशन इन विच like limit is minus infinity to infinity, and there is certain signal called x of t and it is multiplied with delta of t. Okay, अगर डेल्टा ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई है एंड वी आर इंटीग्रेटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और t, देन इट्स वैल्यू इज गोइंग टू बी x ऑफ 0. मतलब जो ये 0 पॉइंट है यहीं पे उस सिग्नल की भी वैल्यू रहेगी सिंस इट इज मल्टीप्लाइड विद डेल्टा ऑफ टी. मतलब जो अदर वैल्यूज है अदर देन 0, सो वहां पे वो सिग्नल जो है x ऑफ t, दैट इज अगेन गोइंग टू बी 0. इट्स वैल्यू विल बी एग्जिस्टिंग एट x इज इक्वल्स टू 0. सो x ऑफ 0 हमें मिलता है, right. This was actually second property. This is first property ki area under this curve or area of delta of t is nothing but equals to 1. Okay, so next we have यूनिट स्टेप फंक्शन. सो यूनिट स्टेप फंक्शन का मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि वो आपको अच्छे से पता है. u ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 होता है किस लिए? t इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 के लिए. t इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 के लिए. नाउ अगेन द थिंग इज कि यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम में वी डोंट कंसिडर इट लाइक, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू डिफाइन नहीं है u ऑफ t की, बट स्टिल वी टेक इट एज 1. ओके, अगर t is less than 0 then u of t is going to be 0 itself. मतलब पॉजिटिव जो पॉजिटिव हाफ है हमारा ग्राफ का, सो वहां पे हमारे u of t की वैल्यू एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज in normal case it is 1. All right, so what if like we apply or we do shifting thing, मतलब अगर हम u of t को shift करते हैं, so let us suppose this is my signal u of t, this is my signal u of t, और अगर मैं इसे शिफ्ट करता हूँ टी जीरो से, लाइक दिस इज टाइम इंस्टेंस टी जीरो. ओके, सो नाउ माय न्यू सिग्नल विल बिकम लाइक दिस. सो इसका जो फॉर्मूला रहेगा, नाउ लेट अस सपोज दिस इज u ऑफ t. नाउ व्हाट दिस विल बी, मतलब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा या फिर इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? अगर है तो लिख दो. हाउ कैन वी राइट दिस? सी हमने क्या किया है, t अगर 0 से बड़ा है तो उसके लिए u of t की वैल्यू 1 है. नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव स्टार्टेड आवर सिग्नल फ्रॉम t0. t0 जो टाइम इंस्टेंस है उससे हमने शुरू किया है. तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, जो पॉजिटिव हमारा पार्ट है टाइम का, सो उसमें से वी आर सब्ट्रैक्टिंग t0. वी आर सब्ट्रैक्टिंग मतलब इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है जो टोटल टाइम था हमारा, राइट. सो formula for this is going to be u of t minus t0.
समझ रहे हो, ये जो टाइम इंस्टेंस है ये t0 है, तो दिस विल बी u of t minus t0. So this is called as a shifting operation. Guys, am I audible to you? आप सुन रहे हो मुझे? Yes, no, maybe. Okay, fine. I needed a confirmation and I got that. Okay, Pranshu is having some issues, I guess, maybe. अगर कुछ इशू है प्रांशु तो बता के लीव करना, ओके? नेटवर्क इशू है कुछ भी. ओके, now let's go further. So next signal we have is exponential signal. Okay, so exponential signal तो आपको पता है कि किस तरीके से होता है, लेकिन let me just tell you a general form of exponential signal. So it is written as x of t is equals to c into e raised to at. तो यहाँ पे जो c है, this also and this a also, these both are complex numbers. Okay, so c भी complex number होता है, और जो ये a यहाँ पे multiplied है with t, so it is again a complex number. So c की वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं cr, मतलब real part of c plus I into imaginary part of c. So this is value of c. Now this value of this a is going to be sigma plus j omega. Right, so sigma is real part of this a, and omega is imaginary part of this a. So let us suppose हमारा जो c है वो एक रियल नंबर है, एंड हमारा जो a है वो भी रियल ही है, लाइक जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है दैट इज जीरो फॉर एन इंस्टेंस. सो इन दैट केस that exponential signal is called as real exponential signal. Okay, so it may be asked in the gate examination for 1 marks maybe. Okay, सो इन दिस केस नाउ हाउ डज दिस मैटर्स, मतलब यहाँ पे जो सी आर की वैल्यू है या फिर ये जो सिग्मा की वैल्यू है, हाउ डज दिस मैटर्स? सो यू मस्ट बी नोइंग द ग्राफ ऑफ दिस exponential signal. So let us suppose this is our axis, and this is how the exponential signal looks like. Okay, so the value of this exponential signal is, let us suppose, or sigma is, let us suppose sigma 2. यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू है वो सिग्मा 2 है. आई एम नॉट राइटिंग दिस कंप्लीट थिंग लाइक सी इंटू ई रेस टू सिग्मा टू इंटू टी, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे ए की वैल्यू सिग्मा 2 है, ये पकड़ के चलिए, दिस इज सेम फॉर्मूला. एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सी आर, मतलब जहां पे ये सिग्नल वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सी आर और रियल पार्ट ऑफ द कोएफिशिएंट. राइट, नाउ let us suppose I have another value that is sigma 1. So my exponential signal will look like this. I have another value that is sigma 3. This is sigma 3. This is sigma 1. So sigma 1, sigma 2, sigma 3. Now the relation between this sigma 1, sigma 2 and sigma 3 can be written as sigma 3 will be greater than sigma 2 and it will be greater than sigma 1. मतलब क्या है, sigma 1 जो है वो छोटी वैल्यू है, सिग्मा 2 जो है वो बड़ी है, एंड सिग्मा 3 जो है वो सबसे बड़ी है. सो अ कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम हियर. क्या कंक्लूजन है कि जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, it as the value of sigma increases, so in this case what will happen, our graph will be coming closer to y axis. I hope you got my point, right? I hope you get my point कि जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी उस तरीके से हमारा जो ग्राफ है दैट विल बी कमिंग क्लोजर टू वाई एक्सिस. राइट, अगर मान लीजिए अभी ये जो है ये ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल था, मतलब ये बढ़ रहा था, जो डीकेइंग वाला जो सिग्नल रहता है लाइक जो कम होता जाता है विद टाइम, सो उस केस में भी सिमिलर ग्राफ विल बी ऑब्जर्व. मतलब अगर सिग्मा की वैल्यू हम उस केस में भी बढ़ाते हैं, सो अगेन दैट ग्राफ इज गोइंग टू बी लीनिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस. ओके, सो एनी डाउट गाइज टिल दिस, मतलब यहाँ तक कोई डाउट? आई होप आपको ये नई चीज पता चली होगी, मे बी, आई डोंट नो. अदर डाउट्स है कुछ तो डाल दो ग्रुप चैट बॉक्स में. इफ नॉट देन वी कैन कंसिडर. ओह, ऑलराइट, नो 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 डाउट. सो
Now our next signal is rectangular pulse signal. So rectangular pulse यानी कि एक pulse type का signal होता है and it has some area. It has certain like time period, मतलब यहाँ से शुरू होगा यहाँ पे खत्म होगा and it will have a constant value because it is a rectangular signal. I will not draw that. Okay. Then we have sinusoidal signal. So sinusoidal signal का आपने एक formula पढ़ा होगा. So let us suppose x of t is our sinusoidal signal and it is represented as sorry, no, it should not be like this. It should be a sine of omega t, omega 0 t plus, let us suppose, theta. So can you just tell me what is this a? What is this a? Raman, you just wait. Let others answer as well. Can you tell me, guys, Arjun, Pranshu, Shardul, what is this A? A क्या है? मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे साइनोसॉइडल सिग्नल का A इंटू साइन इन ब्रैकेट ओमेगा 0 t प्लस थीटा. सो यहाँ पे A जो है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस साइन signal or say a sinusoidal signal, or it is also called as amplitude, right? Magnitude or amplitude, right? Now what is this theta here? यहाँ पे theta क्या है? I'm not asking about omega 0. What is theta here? Okay. Yeah, it is basically phase, not phase change, but it is phase angle. Yeah, all right. Yeah, phase angle. It is phase angle. So for most of the signals, yeah, it is zero. Phase angle is zero. So that's why our signal starts from the origin and it looks like the way it looks like. Right? मतलब जैसे वो दिखता है, वो वैसे क्यों दिखता है? Because in general cases, it is theta is equals to zero और phase angle is equals to zero. अभी discrete time signal में अगर हम बात करें, अपना impulse signal हुआ या फिर unit step signal है या फिर ramp signal है, so these are same. मतलब the main difference between a discrete time and continuous time is continuous time में delta of t की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है t is equals to zero पे, but in discrete time signal it is defined and it is exact one, it is not infinite. Okay. And similarly for unit step signal, delta sorry u of zero, मतलब जो हमारा टाइम इंस्टेंस जीरो होता है, तो वहां पे भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में there is value defined for that time instance, unlike in continuous time, right? Okay, so we can draw all the signals in uh, discrete time the way we have drawn it in continuous time. So there's not much difference, and I won't be focusing on discrete time signals because there are very few questions asked on those topics. Okay, so we will be focusing more on continuous time signals. So next signal is signum function. It is written as signum function, and it is named as SGM of t. हम साइनोसोडल फंक्शन को लिखते हैं ना कि sin ऑफ t और ओमेगा 0 t समथिंग लाइक दैट. सो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस SGM ऑफ t. सो इसका ग्राफ गाइस कैसे रहेगा? जस्ट अ सेकंड, लेट मी यूज दिस line things. Okay, so these are our axis, x axis and y axis. Signum of t will be represented as, sorry, why the color has not changed? Okay, so this is equals to 1. This has to be actually -1. ये -1 value है, ये 1 value है. This is our y axis, this is our x axis. Okay, so signum of t can be represented as SGM of t. It has two values, or we can say three values. So first value is, it is 1 for time instance t is greater than 0. मतलब t पॉजिटिव t के लिए इसकी वैल्यू क्या है? 1 है. और नेगेटिव t के लिए इसकी वैल्यू क्या है? इट को इज भेजना चाहिए लेकिन वो साला भोसड़ी वाला
Who was it? Pransh, your mic is on. Okay, all right. Guys, please make sure that your mic remains off unless and until you want to talk. Okay, ठीक है, no worries. So signum of t is equals to 1 if it is if the time interval is or the time duration is greater than t is equals to 0. It is minus 1. Yeah, no problem, no problem. I understand that. Sometime it happens. You did not do that intentionally. I understand that. Okay, so what is difference between this signal and our unit step signal? So सिंपल डिफरेंस इज देयर. यूनिट स्टेप सिग्नल में जो टी की नेगेटिव वैल्यूज है या फिर टाइम की नेगेटिव वैल्यूज है उसके लिए वी हैव जीरो वैल्यू, मतलब वहां वहां पे हमारा कोई भी फंक्शन नहीं है, इट इज जीरो. बट इन दिस केस वी हैव व्हाट वी हैव वैल्यू दैट इज माइनस वन. सो कैन आई राइट, माई क्वेश्चन इज नाउ सी, अभी अच्छे से इस सिग्नम फंक्शन को देख लो. Now, let us suppose I shift this signum function here. मतलब मैं एक से यहाँ पे एक ऐड कर देता हूं तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ये बन जाएगा 2, इट वुड बी 2. एंड यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो बन जाएगा 0. मतलब मेरा जो सिग्नल है इट वुड लुक लाइक दिस, जो मैंने रेड में भी ड्रॉ किया है ना. सो ये कुछ कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट. सो ये जो नेगेटिव वाला जो हमारा सिग्नल था इट हैज अलाइंड विथ एक्स एक्सिस एंड इट वी कैन कंसिडर इट्स वैल्यू एज 0. बट यहाँ पे we have positive value and its magnitude or amplitude, whatever you say, it is 2, right? So if I divide that by 2, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूँ, so it will look like exactly unit step signal. So unit step signal can be represented as 1 plus signum function 1 plus sgm of t divided by 2. मतलब 1 मैंने 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि मुझे इसे ऊपर भेजना था उसके एम्पलीट्यूड में. ऑलराइट, सो इस तरीके से. नाउ कैन यू राइट द फॉर्मूला फॉर सिग्नम ऑफ टी? इट शुड बी पीस ऑफ केक, राइट. Write the formula for signum of t in terms of u of t. Anybody can do that. 2u of t minus 1. Okay, so now my like I will give you an exercise to do right here. Okay, so if we discuss signum function in discrete time, so discrete time में अभी देखो यहाँ पे continuous time में क्या था कि we do not have an exact value at t is equals to 0, लेकिन discrete time में we have value. So क्या है, जब n की values positive है, that is n is greater than 0, then we have our function as 1. When n is equals to 0, then our function is also 0. And when there are values of n as negative, we have function as minus 1, right? So do not confuse with this n. N is basically representation of samples in discrete time, discrete time, right? So can you write formula for u of n in discrete time signal? Formula for u of n in discrete time signal. Can you do that? Can you do this? Do it, guys. I need you to do this. Is that u, Raman, that you have written, that is u of t minus u of minus of t? Okay, all right. If you don't understand, let me just represent this. मैं अभी यहाँ पे ग्राफ निकालता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा. Okay, so let me just use our this tool that we have here. Okay, so let us suppose these are our axes. Okay, and abhi this is our u of 1, this is our u of 2,
ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये सिग्नल रहेगा, हमारा जो सिग्नम फंक्शन है वो इस तरीके से रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। सॉरी फॉर दिस, मतलब जो गलत ड्राइंग निकल रही है, but I'm trying to do it fast, so that's why it is yeah, so I think it will be a signum function. Yeah, it is a signum function, ये signum function है, but we have to represent it in the form of u of n, मतलब u of n का फॉर्मूला हमें निकालना है by using this. Okay, so मान लीजिए now, see this is for signum of n, sgm of n, sgm of n. Now try to remember formula for u of n. u of n के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा गाइज? यहाँ पे we will be having one value 1 2 3 4, राइट? सो इस तरीके से कुछ हमारा u of n दिखता है. सो हाउ कैन वी डू दिस? ओके, सो मान लीजिए अभी जो हमारा सिग्नम ऑफ n है, तो इसे मैंने 1 प्लस सिग्नम ऑफ n कर दिया, एस जी एम ऑफ n कर दिया 1 प्लस. तो क्या होगा, ये जो वैल्यूज है ये तो जीरो बन जाएंगे, राइट? यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स थे ना, ये जीरो बन जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे, राइट? बट ये जो वैल्यूज है ये 2 पे चली जाएंगी. नाउ मैं इसे डिवाइड बाय 2 करता हूँ. सो डिवाइड बाय 2 भी करूंगा तो ये फिर से 1 पे आ जाएंगे, बट we will be missing one thing, that is this value. Are you getting this? मतलब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जीरो वैल्यू है, n इज इक्वल्स टू जीरो पे जीरो वैल्यू है, वैल्यू कुछ है ही नहीं. सो व्हाट कैन वी ऐड टू दिस, मतलब हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं जिससे कि we can get that missing thing? डेल्टा ऑफ n, डेल्टा ऑफ n ऐड कर सकते हैं. सो इफ वी ऐड one delta of n here, then our graph will look perfect like u of n. I hope you get this. Get it, guys? Please confirm. समझ में आया नहीं आया? Because you will be having these kind of questions only. मुश्किल नहीं रहेंगे, but it will be complicated. Guys, am I audible? Am I making sense? Please confirm. Yeah. Yes, sir, but please explain again. Okay, now see. सिग्नम ऑफ एन का जो ग्राफ है वो आप समझ लीजिए. ओके, फॉरगेट दिस पॉइंट. यहाँ पे n इज इक्वल्स टू जीरो पे जो मैंने ये पॉइंट ड्रॉ किया है ना, फॉरगेट दिस. सो हमारा जो सिग्नम फंक्शन दिखेगा, सो दिस वुड लुक लाइक दिस. यहाँ पे जो डॉट्स है ना, ये दिस इज आवर सिग्नम फंक्शन बेसिकली इन डिस्क्रीट टाइम. सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू है, it is 0 at n is equals to 0, but in u of n we have u of 1 as 1, मतलब सॉरी u ऑफ 0 एज 1, मतलब जो जीरो टाइम इंस्टेंस रहता है या फिर जो जीरो सैंपल रहता है, सो दैट इज 1, लेकिन इट इज मिसिंग हियर, राइट? सो we will do the thing similar to continuous time signal, but we have to add one delta n here because we are missing one point here. Okay, I hope this was clear. All right, so I have seen several times we have a question, and let us suppose I have given you a function that is e raised to minus of mod of t. Okay, and you have to draw a graph. Let us suppose you have given four graphs. आपके पास four graphs दिए हैं, and you have to take, like you have to choose correct one out of these four. So I don't know you can draw this or not, but what do you think? How much confident you are about this? Like, so I can draw this. Can you draw this graph? Okay, you can give a try. Yeah, please give a try. Okay, you are a bit confident. All right. ठीक है, so let me just tell you. अभी ये mod of t जो है, मतलब ये अगर नेगेटिव रहेगा तो उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, राइट? नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव को क्या रखेगा? वो पॉजिटिव ही रखेगा. सो इफ यू रिमेंबर graph for e raised to minus of t, it looks like this, right? E raised to
minus of t. It looks like this. Graph for e raised to t looks like this. ठीक है? Sorry, it is not like this. It is like this. Exponentially growing signal, right? So यहाँ पे क्या है? We have minus symbol outside this modulus. Okay. So मतलब जो नेगेटिव है उसके लिए वो पॉजिटिव वैल्यूज लेगा और पॉजिटिव के लिए वो नेगेटिव वैल्यूज लेगा. सो व्हाट डज दैट मीन? सी, अभी हमारा जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल सिग्नल का फॉर नेगेटिव टी मतलब ई रेस टू माइनस टी, तो ई रेस टू माइनस टी के जो पॉजिटिव वैल्यूज है, विच वैल्यूज? सी, दिस इज द ग्राफ ऑफ ई रेस टू माइनस टी, बट दीज आर द पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब जो पॉजिटिव टाइम लाइन पे जो वैल्यूज है, सो दीज आर दिस. ये जो ग्राफ है ना, इस तरीके का. सो दिस इज ऑन पॉजिटिव साइड. और हमारा जो पॉजिटिव टी का ग्राफ है या फिर ई रेस टू टी का जो ग्राफ है, उसका नेगेटिव वाला पार्ट, ये दो ग्राफ जो है यहाँ पे कंबाइन होंगे. ओके, सो सी, आवर फॉर्मूला वुड लुक लाइक दिस. ई रेस टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ टी इज इक्वल्स टू, it will have two values. It is e raised to minus of t for t is greater than 0 and e raised to t for t is less than 0. Okay, so e raised to minus of mod of t will be equal to e raised to minus of t for t is greater than 0, e raised to t for t is less than 0. Okay, try to understand this formula. It is a bit complicated, but I hope you people are getting this. Once you get this formula, you can easily draw the graph. Get this formula? Yes, no, Arjun, Pranshu. Sir, please explain at t is equals to 0. Yeah, at t is equals to 0 for an now see, यहाँ पे जो कांस्टेंट है दोनों टर्म्स में, यहाँ पे 1 ही है ना? सो t इज इक्वल्स टू 0 पे तो ये c की वैल्यू आएगी, सो इट वुड नॉट चेंज, वो तो वही रहेगा. गेट इट? मतलब यहाँ पे या c की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही है ना, जो कांस्टेंट है हमारा वो इट इज 1, सो इट इज गोइंग टू बी सेम. t इज इक्वल्स टू 0 पे मतलब वो कोलाइड होगा ग्राफ. गेट इट? सी, मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव टी के लिए हमें नेगेटिव वाला ग्राफ लेना है, मतलब ये वाला. सो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू दीज आर सेम. ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन ये सेम ही है. सो ग्राफ विल लुक लाइक दिस. Sorry, I am very bad at drawing a. Yeah. So this is x-axis, x of t, or sorry, this is x-axis, this is y-axis, and this is our signal e raised to minus mod of t. I hope we have disconnected the mic. Hello? Yeah, yeah. I I got disconnected. All right. So इस तरीके से. Now, can you imagine the graph of e raised to mod of t? e raised to mod of t का ग्राफ आप इमेजिन कर सकते हो. इसके लिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ. इट वुड बी e raised to t for t is greater than 0 and it would be e raised to minus t for t is less than 0. ठीक है? सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. मतलब यहाँ इसका जो पोर्शन है ना, मैं यहाँ पे दूसरे कलर में वो ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. जो ये पोर्शन यहाँ पे जा रहा है ना, वो दिखेगा, इस ग्राफ का ये वाला पोर्शन दिखेगा, एंड दिस पोर्शन विल नॉट बी appearing in this signal e raised to mod of t में. Mirror image of, yeah, mirror image by considering x-axis as a what we say, what point is that? Reference point. Yeah, x-axis will be considered as a reference and we can just mirror image that graph, right? So it will look like this. All right, so that is for e raised to minus mod of t. Okay, there is a one again function sample of t. Sample of t का जो formula होता है वो होता है sin
sample of t is represented by SA of t, and its formula is sine of t divided by t, right? And its graph looks like, let me just draw the graph. And I haven't seen a single question on this particular topic, so I'm not very confident that this will be asked in the examination, so we will not just like focus more on this. Okay, so I will just draw the graph just to show you how this signal looks like. So it looks like something like this. Okay, this is not the signal. The dotted lines are not the signal. This is just a reference point for me to draw those lines. Okay, so ये कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब हमारा साइन फंक्शन ही है बेसिकली ये, बट इट इज डिवाइडेड बाय टी। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, एंड एज टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी एम्पलीट्यूड विल टेंड टू जीरो, राइट? सो इस तरीके से वो कुछ दिखता है सिग्नल। दिस इज सैंपल ऑफ टी, एस ए ऑफ टी इट इज, एंड इट इज sin t by t. Okay, now last point for today, or maybe second last point for today is we have to perform certain operations on signals, right? So there are three operations. Can you name them? Can you name three operations performed on signals? Usually we perform those operations. You have any idea? Shifting, scaling, and folding. Yeah, shifting, adding, and folding. Folding bacha hai shayad, right? So scaling, shifting and adding basically, yeah, okay, that's a different thing. Yeah, adding is a bit different thing, so we will not consider that thing as of now, because when we talk about adding, we add two signals, right? So we or I'm talking about operations that can be performed on a single signal only, मतलब हमारे पास एक ही signal है, and we have to perform operations. So three basic operations are there, that is shifting, scaling, and folding. So let us suppose you have one scenario in which you have to perform three of these operations, मतलब ये तीनों operations आपको perform करने हैं. So if you mess up with order of these operations, your whole मतलब question जो है आपका वो गलत हो जाएगा. Okay, so there is some sequence, or we can say order of these operations in which it has to be performed. So that order is, whenever we solve questions on like these operations, first of all we have to perform shifting thing, then we have to perform scaling thing, and lastly we have to do folding. सो ये लिख लो अच्छे से, मतलब अगर फ्रंट कवर जो होता है ना उस पे भी लिख लोगे तो भी इट वुड बी दिमाग में पक्का करना है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू शिफ्टिंग, देन वी हैव टू डू स्केलिंग, एंड देन वी हैव टू डू folding. So this is the order. Okay, your answer will not be, your answer will मतलब आपका आंसर गलत नहीं होगा unless you are making some mistakes at somewhere else. Okay, so चलो सबसे पहले शिफ्टिंग ऑपरेशन क्या होता है. सो व्हाट इज शिफ्टिंग ऑपरेशन? सो शिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए गाइस ट्रिक एक है. नाउ लेट अस सपोज दिस इज माय कोऑर्डिनेट्स, दिस इज x, दिस इज y. ओके, सो मैं जब x इज इक्वल्स टू t प्लस 2 करता हूं, सी my basic signal is x of t and I have to perform shifting operation, या फिर मुझे उस सिग्नल को शिफ्ट करना है by 2. so x of t plus 2 मैं जब करूंगा, so मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा complete axis है, I will shift that axis by 2. now कैसे? see, let us suppose I have a random signal x of t. just a moment. Yeah, so this is my x-axis, this is my y-axis, and let us suppose I have a signal. Okay, so this is y-axis, this is x-axis, this is 2, this is let us suppose minus 2 this time instance, and this is minus 3, and this is 0. So यहाँ पे y of t is equals to मेरा क्या है, x of t है. Okay, so when I perform shifting operation, मतलब मैं यहाँ पे x of t plus 2 करता हूँ. so in this case मुझे क्या करना है, ये जो मेरा coordinates है x and y,
आई हैव टू शिफ्ट देम बाय 2, मतलब पहले यहाँ पे आएगा और बाद में यहाँ पे आएगा. सो आवर ग्राफ विल लुक लाइक दिस. ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 0 होगा और ये जो -2 वाला पॉइंट है, दिस विल बी शिफ्टेड बाय 2 and it will become -4, and this -3 will become -5, right? So this is nothing but x of t plus 2. मतलब समझ रहे हो ना, सी यहाँ पे +2 कर रहा हूं तो मेरा जो ग्राफ है वो नेगेटिव साइड में जा रहा है. एक्चुअली ग्राफ नेगेटिव साइड में जा रहा है, लेकिन हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो पॉजिटिव साइड में हम शिफ्ट करें. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, मतलब आपको जैसे अच्छा, मतलब आपको सिग्नल शिफ्ट करना है, सो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में सिग्नल को शिफ्ट कीजिए, या फिर अगर लाइक यू इफ यू वांट टू रिमेंबर द थिंग की कोऑर्डिनेट शिफ्ट करने हैं, सो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट कीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव में करना है, राइट? सो लाइक इन दिस केस अगर मुझे x ऑफ t माइनस 2 फाइंड आउट करना है, सो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे कोऑर्डिनेट्स है आई विल टेक देम हियर. सो मेरे जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे रहेंगे एंड माय न्यू ग्राफ विल लुक लाइक दिस. सो ये जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 4, ये रहेगी 0, ये रहेगी -1. This is how we perform shifting operation. Okay. Next we have is scaling. तो scaling में क्या होता है? सी scaling में let us suppose now I have a signal x of t. So यही सिग्नल है, पकड़ लो, ठीक है. So x of t की जो वैल्यू है for now पकड़ लो कि x of t की वैल्यू let us suppose now this is okay, just a second, let me just draw it again. Okay, so this is our axis and यहाँ पे अगर मैं x of t की स्केलिंग करता हूं, सो लेट अस सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग दिस टाइम विथ 2. सो x ऑफ 2t अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करना है मुझे, सी यहाँ पे x ऑफ +2 पे ग्राफ हमारा खत्म हो रहा था, यहाँ पे कुछ -3 पे ग्राफ शुरू हो रहा था, राइट? इट वाज लाइक दिस. So when I am multiplying this time with 2, so I have to divide this graph by 2. मतलब क्या करना है, सी यहाँ पे जो 2 पे खत्म हो रहा था ना, तो 2 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो मतलब वो 1 पे खत्म होगा. यहाँ पे -3 से शुरू हो रहा था ग्राफ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, -3 को 2 से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे ये कुछ -1.5 पे ग्राफ शुरू होगा. सो मेरा ग्राफ वुड लुक लाइक दिस. समझ रहे हो ना? सो दिस इज नथिंग बट x ऑफ 2t, मतलब मैंने टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे t को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं ग्राफ को 2 से डिवाइड करूंगा, मतलब ग्राफ के जो हमारे टाइम इंस्टेंसेस है तो उसको मैं 2 से डिवाइड करेंगे. उल्टा है यहाँ पे, राइट? सो पहले भी आपने देखा ना कि अगर t+2 है तो ग्राफ को नेगेटिव में ले जाओ, t-2 है तो ग्राफ को पॉजिटिव में ले जाओ. And scaling में if we are like multiplying t with certain number, we are dividing that time period by that number. It is a bit complicated, but it is what it is. Okay, so now let us suppose x of t is my this signal, जो हमारा original signal था ना x of t, तो वो वही है. So if I have to draw a signal or the scaling is x of t by 2, मतलब मैंने यहाँ पे t को क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है. सो इन दिस केस व्हाट यू विल डू इज, ये जो टाइम इंस्टेंसेस है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मैंने टी को यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है. सो ग्राफ विल एंड एट +4 एंड इट विल स्टार्ट एट -6, इस तरीके से. This is x of t by 2. I hope you get this. Okay, so this is scaling. And folding is what? Folding is basically mirror image by taking our y-axis as a reference. ठीक है, y-axis को reference पकड़ लो, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट में जाएगा और जो राइट वाला है वो लेफ्ट में आएगा. ठीक है, सो उस तरीके से हमारे जो टाइम इंस्टेंसेस हैं वो भी चेंज होंगे. लाइक अगर मैं इस ग्राफ को फोल्ड करता हूं, दिस पर्टिकुलर ग्राफ को, तो ये जो -6 है ये यहाँ पे जाके +6 बन जाएगा, और ये जो -4 है वो यहाँ पे जाके, ये +4 है यहाँ पे जाके माइनस सॉरी या -4 बन जाएगा. सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. ओके, this is 6, this is 4, and this is -4. So that is our folding operation. So we have seen shifting, scaling, and folding. Shifting, scaling, and folding. You remember this order, and there is very less chance of making any mistakes. Okay, so I think guys that's it for today.
In the next class, we will be starting types of systems, that is causal, non-causal, and anti-causal. Okay, yeah, fine. Any doubt or something you wanted to tell me? Anything? Or shall we just wrap up and say good night, bye bye? Yeah, thank you, good night. All right, all right. One more thing, guys. All right. So, Raman and Shadul, since you have shown some interest in that electric car project, I have a small request for you. Can you just do one thing? See, what we have to do is we need batteries. We need batteries for the car, and you have to do some research. Like you can take half an hour a day, मतलब आधा घंटा निकालिए दिन का हर रोज अगले 8 दिन के लिए, and try to find out from where can we export batteries, okay, or where can we order batteries, and what will be the rating, what will be the price. I will add both of you to a separate group, and you can post anything related to that in that group. Okay, so are you comfortable? Can I add you, can I add you in that group? Okay, I will add you in that group, and I expect you fetch some results for me, right? It will be helpful for you also. Okay, and Shardul, hopefully, if you are in Aurangabad next month, we will meet. Okay, I have some work, so I will be coming to Aurangabad. Hopefully, we can meet. All right, guys, thank you so much for joining, and see you soon. All right, bye bye. Good night. You can leave the class. Yeah, yeah. Good night. Good night. Good night, Arjun. Good night, Pranshu. Please leave the class.